senior faculty members, to have Marhan Madam, to have नरेश ज़्यादा भटका हुआ है और अध्यात्म से शायद हिंदुस्तान का ही ज़्यादा वास्ता है। पर पिछले 50 साल से तो मुझे नहीं पता आप में से कितने व्यक्तियों को एक अंदाज़ा है, महर्षि महेश योगी जी उन्होंने मेडिटेशन की विधि से अपने ही अंदर साइलेंस में जाकर के और पेंडुलम के तरीके से कि जितना हम अपने अध्यात्म में जाते हैं, साइलेंस में जाते हैं, उतना ही हम सांसारिक दुनिया के अंदर हम खूब कामयाब होते हैं। इन बातों को ज़्यादा अच्छे से डैनियल जी बताएंगे। मेरा तो भाव ये है कि कई बार ये जो वैदिक संस्कृति है, हमें लगता है कि हमारा अधिकार ज़्यादा है, पर अगर जीवन के तरीके से देखें, किसी उद्देश्य के लिए अगर जीवन समर्पित करने वाली सी बात है, तो इन लोगों ने पिछले 70 सालों के अंदर अपने जीवन को एक तरीके से इसी दिशा के अंदर झोंक रखा है। तो this is what they have been doing all their life, spreading the beautiful and wonderful message of Maharishi Mahesh Yogi ji, of our scriptures. Testing. Double. Okay. As I was saying, this technique is different than all the other techniques that you've heard about or read about. How many people know about a meditation that their grandparents told them about? How many? 1, 2. 2 people. So this is different in many ways. One way it's different is because it's so easy to do. It's so easy and it's simple. It uses the natural tendency of the mind to settle down and to go in. So there's no concentration. There's no controlling the mind. Because many people think of meditation as controlling the mind, because the mind is always shifting and going from one thought to another, right? Right now you're thinking about breakfast. You're thinking about how long am I going to talk? So the mind is always shifting. Some of them, they had attended the program of Dr. Ashley Deans yesterday, and they have come for the initiation, so they are also sitting with them. How many people were here yesterday? So they should go and be instructed. Yeah. Thank you. This technology, consciousness-based education technology, as I said, is simple and easy. And the reason it's so easy is because it's an understanding of the laws of nature and how life works. So the analogy would be like your mind, consciousness, awareness, being awake is like an ocean. And the ocean represents that deep level inside, that Atma inside, but the waves on the surface of the ocean are there. And most of us live our life on the surface level of life. And so the active mind, the waves on the ocean, with this technology is allowed to become less active and less active and less active and more quiet and more silent and more deeper automatically. Automatically, in the same way that a wave eventually returns to the ocean. Gravity, without any effort. One of the longest and most enduring laws of nature is the law of least action, the simplest thing. So this graph illustrates,
comparing the deeper levels of the mind with the deeper levels of life. And the deeper levels of life are explained in modern science with in physics. Life is in layers. There's the surface layer, the molecular layer, the deeper level, the atomic level, the subatomic level, the quantum mechanical parts. Life, as you go deeper into life, you go from concrete to more abstract. And eventually, modern science describes life at that deeper level as fields. The quantum mechanical field, the electromagnetic field, the gravitational field, and beyond time and beyond space, beyond time and beyond space is this universal field, the Atma, deep inside everyone. Everyone has that deep, unlimited, infinity level inside. But we're living life on the surface, active, active, active. So this technology allows the mind to go in naturally and spontaneously. So this illustrates the surface level articulated thought, abstract thought, deeper inside, fine feeling level, and pure consciousness, pure wakefulness, being alert inside. The experience itself is one of being at rest, but the mind is alert. It's different than waking, sleeping, and dreaming. Different as measured in the laboratory. So it's a fourth state of consciousness, restful alertness. And this is achieved automatically, spontaneously, without controlling the mind. So, Sumit, would you like to explain a little bit about the relationship of natural law and the mind? सरल शब्दों में इसको कुछ बताने की कोशिश करूँगा। जैसे हम रियलिटी के बारे में बात करें, हमेशा से एक कंफ्यूजन रहता है कि हकीकत ये जो साइंस वाला जगत है, एटम्स मॉलिक्यूल्स वाला जगत है, ये जगत सत्य है, या हम दूसरी तरफ जाकर के मन और अध्यात्म का जो जगत है, ये जगत सत्य है। तो महर्षि जी का संदेश चलता है कि दोनों जगत की असल में एक ही यूनिफाइड फील्ड है जहाँ से सारी उत्पत्ति होने लग रही है। उनका भाव है कि अगर हम फिजिक्स की दृष्टि से देखें तो जैसे जैसे और अंदर और गहरे हम जाते चले जाते हैं, फाइनली आज के जैसे अगर आप में से कोई फिजिक्स से जुड़े हुए हों, मुझे बहुत अधिक फिजिक्स तो नहीं आती, मेरा मैनेजमेंट का या अंग्रेजी का विषय आता है, तो उसमें कहा जाता है क्वांटम फिजिसिस्ट के तरीके से कि एक लेयर है जहाँ से सारे नियमों की उत्पत्ति होती है, उस स्थान को कहते हैं यूनिफाइड फील्ड। वहीं से ग्रेविटेशन, वहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वहीं से बल्कि और ऊपर आए तो कहीं एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जगत शुरू होता है। पर जैसे ये कल डॉक्टर एशले डीन्स आए थे, उन्होंने थोड़ा सा जो जिक्र किया कि हमें यहाँ पर मान लो लेक्चर स्टैंड दिखाई देता है, हमें तो ये सॉलिड लकड़ी का दिखाई देता है। अगर हम और गहराई से देखेंगे तो हमें शायद मॉलिक्यूल्स के स्तर पर कुछ प्रतीति होने लग जाएगी, और गहरे जाएंगे तो हमें फिर एटम्स के लेवल पर कुछ दिखने लगेगा। उससे और गहरे जाएंगे तो मान लो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के लेवल के ऊपर वहाँ के लॉज अलग आने लग जाते हैं। उससे गहरे जाएंगे तो क्वार्क्स के लेवल पर आने लग जाएगा, और वहाँ अगर हम पहुँच सकें तो हमें ऐसा लगेगा कि वहाँ तो खाली स्पेसेस हैं, वहाँ सॉलिड दिखने वाली कोई चीज़ नहीं है, वहाँ तो सब कुछ बल्कि खाली अधिक है। अब उसी तरीके से जैसे ये परिस्थितियों को समझने का एक तरीका है, वो तो पदार्थ के तरीके से, ऑब्जेक्ट के तरीके से वैज्ञानिकों ने देखा। अगर हम किसी बात को मन के तरीके से देखें तो सबसे ऊपर वाला जो आर्टिकुलेटेड थॉट है कि हमारे मन का सबसे ऊपर का लेवल है। जैसे मैं बोलने लग रहा हूँ, कोई बात वहाँ पर आई और मैंने उसको बोल दिया, वो सबसे सरफेस लेवल है, मैंने सोचा और उसके बारे में मैंने बोला। कोई संस्कृत से अगर जुड़े हों तो चार तरीके की
दीवानी कही जाती हैं, बैटरी का पश्यंती और बड़ा। अभी तो ज़्यादातर जो भी हमारा विचार है वो आर्टिकुलेटेड थॉट होता है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ ऊपर की तरफ है। अगर कोई तरीका हो जहाँ से विचार अभी हमें सामान्य से दिखाई नहीं देता है, हम वहाँ तक चले जाएं तो वो और गहरी लेयर होगी। चलिए ये चेंज हो गया तो मैं इसी साथ बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारे मन में एक बहुत वो सूक्ष्म स्तर है जो दिखाई नहीं देता है। हमें तो सिर्फ यहाँ तक का ज्ञान है, ऊपर ऊपर कोई विचार आ गया तो पता लग गया, उससे गहरा हमारा अनकॉन्शियस लेवल है, सबकॉन्शियस लेवल है, उसमें कहीं से एक बहुत छोटी सी चीज चली और जैसे जैसे ऊपर आके गई वो हमारे लिए और ज़्यादा एक्सप्लिसिट होती गई। एक उदाहरण देते हैं कि मान लो एक समुद्र है, ओशन। उस ओशन के अंदर ऊपर तो बहुत सारी लहरें लगती हैं, हमें लगता है खूब चलता है, खूब लहर, पर अगर हम उस ओशन की गहराई में जाते हैं तो वहां तो एकदम बिल्कुल शांति है। ऊपर सुनामी आती रहे और हलचल चलती रहे, पर अंदर की तरफ तो एक बिल्कुल बिल्कुल सहजता है। अब उस सहजता से जैसे ही एक बुलबुला बनने लगता है, समुद्र की गहराई से एक बहुत छोटा सा बुलबुला चला, थोड़ा सा ऊपर आया और उसके अंदर और ऑक्सीजन में भी बुलबुला बड़ा हुआ और ऊपर आया और बड़ा हुआ। फिर जब वो काफी ऊपर आ जाता है तब हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर आता है, हमें पता लगता है कि अरे विचार आया और ऊपर आकर के वो फूट जाता है। ऐसा ही हमारा मन है, उसकी कहीं बहुत गहरी लेयर से कोई विचार सूक्ष्म सा उठा पर हमें पता ही नहीं, क्योंकि वो हमारी गहरी लेयर के अंदर अभी एक्सप्रेसिव नहीं हुआ है, और ऊपर आया और ऊपर आया, फिर सबसे ऊपर कॉन्शियस लेवल के ऊपर आकर के हमें पता लग जाता है। ब्रह्मचर्य का असल में भाव है कि जैसे समुद्र के अलग अलग लेवल है, ऐसे ही हमारे मन के अलग अलग लेवल हैं। अगर कोई तरीका हो सके जिससे हम अपने कॉन्शियस लेवल से और गहरे जाएं, तो हम विचार को वहां पकड़ पाएंगे जहां गंगोत्री है, जहां सोर्स ऑफ थॉट है। और वो कहते हैं मैटर का ये रास्ता और माइंड का ये रास्ता, ये दो अलग अलग चीज नहीं है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। यहीं से हमारा मन भी बनता है और यहीं से हमारे पदार्थ भी बनते हैं। और इसको वैज्ञानिकों ने अब तक लगभग 750 रिसर्चेस हो गई हैं द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, उसके द्वारा बताया। सर पदार्थों तक आते हैं, पंचमहाभूत तक आते हैं, क्या वही बातें आप बता रहे हैं? इससे रिलेट कर पाएंगे? This question would be for you, Dr. He says that Maharishi Patanjali has talked in terms of Sattva, Rajas and Tamas. Although I'm not very sure, because Sattva, Rajas and Tamas, they are there in the 13th chapter of Bhagavad Gita, but Patanjali Yoga Darshan, perhaps it does not talk about it, because those are just 195 state aphorisms. But anyway, complete these questions. So if you have any questions, please ask the question. Don't wait till the end. आप लोगों के जो भी सवाल हैं, मेरे विचार ये है कि पहले आप सुन लें और क्वेश्चन का सेशन अलग रखें। पहले आपके सिद्धांत को समझ लें। Once we understand the principle of the universe, then we talk about Yes. So the reason why we're showing these slides of science is because modern science describes life in layers. And the most advanced form of physics describe this universal level deep down inside that is similar, exactly the same as the ancient Vedic understanding of the Atma, of the Brahm, of totality, no beginning and no end, like the vacuum state, beyond time and beyond space. And your question is addressing the particular descriptions of life, Raja. So what you said, what we're talking about is the technique
to go beyond time and beyond space to achieve this level. That it's natural and spontaneous. The natural level of life is to be full and expanded. That is the ocean of consciousness. But we're living life in the parts, on the surface level, the waves. So this course is not to describe the parts of life that you're talking about in referenced in Patanjali's Yoga Sutras, but we're talking about the technique to take advantage of this universal level deep down inside of everyone. Right now, deep down inside, you all have this level of silence. And the technique doesn't make it happen, but it allows it to happen, like the waves on the ocean. There's no philosophy, no belief. It happens automatically and spontaneously as a result of this technique that is effortless, in the same way that the waves on the ocean settle down effortlessly, spontaneously. As I mentioned, the mind is always shifting from one thought to another thought. This technique allows the mind to go to that area that's more attractive deep down inside. So that deep level is pulling the mind or allowing the mind to settle down from active, less active, less active, less active. Does that answer your question? Okay, good. So this quote is from the Upanishad. The peaceful, the blissful, the undivided is thought to be the fourth. That is the self. That is to be known. In the laboratory, they've measured that the meditative state in this technology is different than waking, dreaming, and sleeping. It's the fourth state of consciousness that you experience during the technique. There's lots of research about this. Over 700 different studies have been done, and it's described as a wakeful hypometabolic physiological state. And that's a mouthful. But it's that the amount of rest that you get during this technique is deeper than deep sleep. Almost twice as deep. It doesn't replace sleep, but the state of rest that the body gets is measurably deeper. And everyone knows how good you feel if you're well rested. Also, everyone feels how a little bit dull if they don't get enough rest. So all of the benefits, for instance, sleep, the body rejuvenates during this deep rest. So during this technology, the body rejuvenates more by getting rid of the accumulated tension, fatigue, and stress that's in the physiology. So I'll just go briefly through some of these slides because some people think that they're boring, but basically the point that I'm making is that this is a real thing, it's a legitimate thing, and it's a very practical thing. Practical in the sense that the mind and body grow in the direction of full potential. And simultaneously, disease and stress and unease go away and gradually go away. For instance, high blood pressure, people with high blood pressure who learn, it tends to go in the direction of balanced. This technology has been measured at the University of Wisconsin Medical School to reduce heart attack, stroke, and death. So it's a very practical thing. So I think it's also recommended by the United States American Heart Association. And it's the only meditation technique that is recommended because of the research in the laboratory. As I mentioned, reduced heart rates of death, heart attack and stroke by 48% compared to the control group. So I'll briefly jump
to the most recent research, which is the changes that take place in the brain. So this technology brings positive changes to the whole physiology. So the EEG measures the neuronal firings. So on 32 points on the brain. We're going to have, during this week, a live demonstration of someone sitting, thinking, and then beginning meditation. And you'll see the difference. Now, other meditations have been measured in the brainwave, and the brainwave signature is different, whether you're concentrating, whether you're focusing, whether you're thinking about thinking, whether you're thinking about philosophy. And scientists have categorized these different techniques into 3 categories. Automatic self-transcending is here, and the scale is from the most effort to the least effort. The most effort to the least effort. This shows the points where the measurement is taking place. On the left is a person that's sitting with their eyes closed, a normal person. The bars between, you saw this yesterday, the bars between these points show communication between different points of the brain, different parts of the brain. You can see that normal person doesn't have a lot of liveliness. On the right-hand side is the very same person 3 months later. This technology wakes up the brain. So far, it's been shown to be the only technology that enlivens the total brain functioning, optimizing brain functioning. And everything you do depends on the quality of your thinking. Because you have thinking, then you have action, and so on. So if you want to jump in at any time, you can. Whatever is comfortable to you, sir. But I just don't know if my American accent is... Everybody understands so far? Okay. Am I talking slow enough? Yes. Slow. So, I'm trying to make the point that this is a real thing. It's a practical thing. It's something that's been measured in the laboratory compared to other techniques of self-development, and it's easy, it's simple, and it works automatically. And when you're instructed, how many people want to be instructed today? Only 2? Only 3? Shall I talk longer? Okay, now, those who want to be instructed, there's a procedure. It's 4 consecutive days, and it's about an hour, hour and a half each day. On the first day, you'll be instructed, and you will have this experience without effort, without concentration, and it will be automatic. The next 3 days, we explain a little bit more, and the understanding will be there. So first the experience, and then we satisfy your intellect, how it works. We explain. And so that takes place over 2 or 3 days. Now the technique itself, I mentioned, doesn't involve concentration, because concentration keeps the mind on the active surface level. If you're focusing on something, you're not allowing the mind to shift naturally, and the mind wants to go deeper inside. And the technology of that, if you want to explain the sound, the procedure that we go through, and so on, because concentration is an active thing. It keeps the mind on the surface thinking level. And so there's no focus in this technology, no concentration. You will receive a sound and how to use that sound, because sound has qualities. Some sounds have pleasant qualities. Other sounds are not so pleasant.
So this sound is selected for you that allows the mind to go inwards. It's a special sound, and it comes from this ancient Vedic technology. He mentioned my instructor was Maharishi Mahesh Yogi. Good morning. So I think you should go ahead and do the, or Monica. Just basically the end of the prep in 4 days and so on. Dr. Daniel ने जो बताया So I just briefly went over some main points. We don't have a lot of time. And very comfortable and there is nothing better than a very senior in communicating with you, but for those of you जहाँ ज़रूरत पड़ती है थोड़ा सा बताने की। इन्होंने एक तो कहा कि अब तक हमें 3 स्टेट्स के बारे में हम सबको पता होता है, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति कहते हैं। हम अभी जागे हुए हैं क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस है, पर इस अवेयरनेस के साथ थकावट होती है। हम 12 घंटे में 15 घंटे में नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं, सोने की ज़रूरत पड़ती है। नींद के अंदर उसको सुषुप्ति कहते हैं, गहरी नींद को, बिल्कुल हम ऑपोजिट तरफ चले जाते हैं। उसके अंदर खूब रिलैक्सेशन तो होती है पर जाग नहीं होती है, अलर्टनेस नहीं होती है। सपने के अंदर तो बीच बीच का रहता है, थोड़ी सी जाग, थोड़ा सा आराम। ज़्यादातर व्यक्तियों को 99% व्यक्तियों को इन्हीं 3 स्टेट्स के बारे में पता होता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। पर जब हम ये मेडिटेशन करते हैं, भावातीत ध्यान करते हैं, तो पहली बार हम एक चौथी स्थिति की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर जितनी जाग हमारी अब जागृत में है, अभी हम जैसे जागे हुए हैं, इससे डबल जाग होती है, और जितना रिलैक्सेशन हमें गहरी नींद से मिलता है उससे डबल रिलैक्सेशन मिलता है। वो जो यहाँ लिखा हुआ था, शिवम सुखम शांतम अद्वैतम मंदन के, वो जो शब्द लिखा हुआ था, वो उस चौथी स्थिति की तरफ इशारा था कि हम जब ध्यान में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उस चौथी स्थिति को, या चौथी के लिए संस्कृत में एक शब्द आता है तुर्य, तुर्य स्थिति को हम नेचुरली अचीव कर लेते हैं। और डॉक्टर डैनियल ने ये बताया कि और भावात्मक ध्यान से फायदे क्या क्या होते हैं। इन्होंने कहा, बस मैं जल्दी कोशिश करता हूँ, कि नेचुरली जो आपका ब्लड प्रेशर है, किसी का कम होता है, कम रहता है, मान लो सिस्टोलिक डायस्टोलिक किसी का 90/50 है, तो स्वतः ही वो ऊपर की तरफ आने लग जाता है। किसी का अधिक ब्लड प्रेशर है तो नेचुरली कम होने लग जाता है। उसका कारण है कि सबसे बड़ा डॉक्टर कौन, हमारी मशीनरी का, हमारी हम आत्मा कहें, हिंदुस्तान में हम इजीली आत्मा कह सकते हैं, या जो यूनिफाइड फील्ड है, वो सबसे बड़ा डॉक्टर है, और उसे पता है कि कहाँ पर किस तरीके से मूव करना है। इन्होंने जिक्र किया कि यूनाइटेड स्टेट्स हार्ट एसोसिएशन जो है, वो पहली बार उसने अपनी रिसर्च में पाया, those of you who are connected with this beautiful world of science and biology, उसने कहा कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की विधि है जिसके अंदर नेचुरली आपके हार्ट पर जोर नहीं पड़ता है, और 35% तक की आपकी इम्प्रूवमेंट्स नेचुरली हो जाती हैं। फिर इन्होंने जैसे वो EEG के ब्रेन के पैटर्न दिखाए थे। एक जो सामान्य व्यक्ति है, उसका ब्रेन अलग अलग हिस्सों से तो दिखाई देता है कि एक हिस्से से अलग तरीके की वेव्स आ रही हैं, दूसरे हिस्से से अलग वेव्स आने लग रही है, पर उनके अंदर कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखता है। जैसे ही हम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करने लगते हैं, तो अलग अलग हिस्सों से जो ब्रेन वेव्स आने लग रही हैं, वो समन्वित हो जाती हैं, वो कोऑर्डिनेटेड हो जाती हैं। और इसको हम कहें, जैसे एक परिवार 6 सदस्यों का हो, 6 के 6 अच्छे हों, पर सबकी अलग अलग दिशा है, तो परिवार में वो ठाट नहीं बनती है, वो एक मजबूती नहीं बनती है। अगर परिवार इकट्ठा होकर के काम करता है, तो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली। ऐसे ही जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो अलग अलग जो हिस्से हैं वो
ओके, वुड लाइक और ये कंसंट्रेशन की विधियों से अलग है, क्योंकि कंसंट्रेशन भावातीत ध्यान का परिणाम है, पर करते समय हमें कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं करना है। ज़्यादातर 3 तरीके की विधियां होती हैं। एक कंसंट्रेशन की विधि होती है जो सिखाई जाती हैं, उसके भी कुछ लाभ होते हैं, पर जहाँ पर भी हम कंसंट्रेशन करेंगे वहाँ पर थकावट हो जाती है, और उस थकावट के कारण हम फिर जिंदगी में अच्छा नहीं कर पाते हैं। भावातीत ध्यान प्रक्रिया के अंदर जब हम करते हैं तो बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं करना होता है। करने के बाद हम जो भी काम करते हैं वो कंसंट्रेशन उसमें बनने लग जाती है। करने के बाद देन व्हाटएवर यू डू, यू स्टडी, यू जो भी आप करते हैं उसके परिणाम के तरीके से। दूसरी कंटेम्पलेशन की विधियां होती हैं, उसमें हम सरफेस पर ही रहते हैं, उसके अपने फायदे हैं, पर वंस अगेन जो खजाना हमारे अंदर ही छुपा हुआ है वहां तक ले जाने के लिए ये तीसरी जो हमारे विधि है भावातीत, भावों के भी परे चले जाना, वो वाली विधि है। ये बहुत प्रैक्टिकल है, इतनी रिसर्चेस की तरफ से प्रमाणित है, और हमें किसी फोकस की ज़रूरत नहीं करनी होती है। ये भावातीत ध्यान के असल में तो हर क्षेत्र से जुड़े इतने फायदे हैं, बट वी वुड रियली लाइक टू हैव समथिंग मोर फ्रॉम सर हिमसेल्फ। फिर ये कहते हैं इसको सीखना हो उसके लिए 4 दिन का सेशन, ये इंट्रोडक्शन अभी देने लग रहे हैं। जब इसको सीखना है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। आपको लगभग 30 मिनट के प्रोसीजर में इनिशिएट करके एक छोटी सी पूजा करके आपको बताया जाता है कि किस तरीके से करना होता है, और इस अनुभव को फिर प्रमाणित करने के लिए और क्या चीज़ें ठीक हैं या गलत हैं, 3 दिन और वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के क्वेश्चन आंसर के माध्यम से वो बताया जाता है। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड होंगे हम अभी भी कर सकते हैं, और अदरवाइज शाम को 4 बजे आप में से जो आना चाहें, वंस अगेन दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड। जब इन्होंने हाथ खड़ा करवाया तो इन्होंने कहा था कि आप में से कितने हैं जो अब इनिशिएशन के लिए आना चाहेंगे। नमस्ते। So सबके पास फॉर्म है? Yeah. Thank you so much, Sumit sir. Thank you so much, Dr. Daniel. So much, Monica. So everyone has their form. Any questions about how TM works? Everyone understood? But how many? We want to start the experience right away, right? Everyone's here कि अभी तुरंत उसको experience किया जाए, right? So quickly fill the form. We can help you fill the form, and anyone who don't have the form? Okay. So we'll just get you the form in a minute. And so quickly fill out the form, and then we'll split into 2. Okay, half in this room, half next room. Okay, and we will start the instructions. Okay, so it will take about 40 minutes. In case someone feels in a very big hurry, किसी को लग रहा है कि बहुत जल्दी किसी को जाना है, तो 4 o'clock we will start again. Okay, ma'am, you are from? Wonderful, wonderful. So for 4 o'clock आ जाइएगा. Please take the you fill the form. Wonderful. So we'll see at 4 o'clock. So everyone else, we'll split into 2 groups. Half of you here, half of you there. Okay. Any questions? So everyone understood the idea of diving inside, not to concentrate on the mantra, है ना? वो जो sound है, उसको sound के level पे use करना, ये चीज़ clear है ना? है ना? Okay, wonderful. है ना? Please bring the forms. Or please collect the forms. So, here.
यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर भी कंटिन्यू हो चुका है। मम्मी का फोन नहीं बना, मम्मी का भी बात है फोन, मम्मी मत तेरा फॉर्म भरे ना। सातरी मतलब लेवा So clear है डायलॉग वाला जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है, हमको साउंड की तरह देखते हैं टाइप करते हैं। ये बात है, कोई डाउट तो नहीं है अभी जो डिस्कशन हुआ कैसा लगा सेक्शन? What do you like the component? Now we will experience it. So we usually ask for parents and fruits from आपने कलर किया So you understand this whole concept of not concentrating and not focusing. मतलब कि मनन चिंतन भी नहीं करना और मन को कहीं कॉन्सेंट्रेट भी नहीं करना, पकड़ के नहीं रख सकते ना। तो मन को कभी आपके मन को जो साउंड मिलेगा उसको एक साउंड यूज करें, अभी आपको बताएंगे कैसे यूज करें। तो विपिन, कैसा लगा आज?
सबसे अच्छा क्या लगा? हाँ? आगे के लिए बहुत साहिल कैसा लगा? कोई स्पेसिफिक पार्ट था जो स्लाइड था या कोई चीज़ जो बताया जो आपको एकदम चमक गया? हाँ? अलग से लगा निशान तो अच्छा लगा। कोई टिप्पणी है, कोई पॉइंट है, कोई क्वेश्चन है? बहुत बिल्कुल माइंड पे कंट्रोल आ जाता है, कोशिश नहीं करते, ठीक है? तो अब हम दो चीज़ें करने वाले हैं। इस व्यक्तिगत निर्देश में आप सबका स्वागत है। ये व्यक्ति आपको बोल रहे हैं कि सबको सामूहिक में बोल रहे हैं व्यक्तिगत निर्देश, आपको एक एक करके निर्देश तो व्यक्तिगत मिलेगा, उसके बाद साथ में बैठे हम ध्यान करेंगे, ठीक है? तो इस व्यक्तिगत निर्देश में आपको एक नाम अथवा एक ध्वनि दिया जाए, उसके साथ साथ उसको उपयोग करने की विधि को और उसकी जो उपयोग करने की विधि है हम किसी को नहीं बताते, अधिकतम लाभ सहमत है? और मैं उस गुरुओं की बात कर रहा हूँ जिनसे हमें जीवन मिला है, जो योगिक ज्ञान मिला है, उनको आभार व्यक्त करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, छोटा सा आयोजन करते हैं, है ना? पूजा भी ऐसा है ना? लेकिन ये एक बेसिकली कृतज्ञता का एक समारोह। तो ये महर्षि गुरुदेव अनंत श्री विभूषण स्वामी ब्रह्मानंद जिनसे हमें तो इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, आपके पास फ्लावर्स है मोनिका जी? मोनिका जी फ्लावर्स है क्या? तो हमारे पास फूलों की कमी के कारण ये जो अक्षत है वो भी पुष्पिता का ही स्वरूप है। तो थोड़ा सा अक्षत लेंगे तो आ जाइए आगे। जिसको आगे आना आ सकता है तो शुरू कर रहा हूँ, है ना? उसके बाद एक एक करके मैं बुलाऊँ, है ना? उसका प्लीज़ थोड़ा पीछे बैठ जाइएगा, एक एक करके मैं एंड फिर वो ध्यान करेंगे एंड सबको मंत्र देने के बाद फिर आगे आ सकते हैं, ओके? हाँ पीछे चलेंगे, एक एक करके मैं बुलाऊँगा, है ना? ठीक है, नहीं अब तो पहले आ जाइए, पहले पूजा तो करेंगे, है ना? स्टार्ट करें तो